this 77th Republic Day. We are proud and it's our privilege to welcome on board Dr. Shashank Mittal and Dr. Nitika Mittal. Welcome, ma'am. Welcome. Sir and ma'am will be indulging themselves for your information on certain topic, medical awareness lecture, which may cover many of the tips in a summary form, as I told you earlier, to make you aware of the health issues, because awareness is half the battle won on any issue. If you are aware, you will avoid mistakes. And to that extent, this lecture is going to be very, very promising and enriching for your life in your growing years. The faster you get the information, the earlier you get it, the better it is. And it's our proud privilege that they accepted our invitation to conduct this kind of a lecture on this auspicious occasion of Republic Day. As an affectionate gesture to welcome them officially and in formal manner, I would like to invite Dr. Shashank and Dr. Nitika to receive a plant of Tulsi each for their blessings to the students, and thereafter they end the lecture. Thank you. So now, without any delay, I would invite Dr. Shashank and Dr. Nitika ma'am to start the proceedings about this lecture which they had planned for. Thank you. Yeah, hello, नमस्कार. मैं डॉक्टर शशांक मित्तल ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन जैसे कि आप सभी जानते हैं बोन्स एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट होते हैं. सो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे कोई डराने, कोई हड्डियों के बारे में बहुत खतरनाक चीज़ें बताने नहीं आया हूँ. जितने भी मैं छात्र यहाँ देख रहा हूँ, I can see them, they are all winners. Those who have stepped out of their houses and are here to study and to build their future, they are all winners. Because आप लोग सब डिफेंस आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, so जो फर्स्ट स्टेप है वो है फिटनेस. Because a strong nation needs strong soldiers, and strong soldiers means you have to be injury free, you have to be active, you have to be strong, and for that matter I am here to guide you for some basic things in life. So health and fitness is our perspective here, and the most important part is that we have to be aware of the common injuries which happen to us, take preventive measures and do a rigorous training कि हमें next time injury ना हो, and we have because injuries pulls you back. You climb 10 stairs, injury brings you 30 stairs down. Okay guys? So why it is necessary to keep ourselves healthy? Because an injury-free body will help you achieve your career growth and help you build your future. So there are three things which demands of the armed forces. You have to do long marches, you have to do heavy exercises, carry heavy loads, and work in extreme weather conditions. So for doing all these things, you need to have a fit body, a strong, agile mind, and you have to be very focused that you keep yourself fit and injury-free. That is, I am saying, repeating the word injury-free because it seems as if it's a very small thing, but not. But no, you have to understand that injuries are so common in sports, so common in gyms, so common in all the physical activities you do, and it is a part and parcel of the whole game. So that it's like if you learn how to be injury-free, you have achieved one part of the story. So that's what my talk here is, that injury prevention is must. Similarly, another picture to show you that the proper posture is important. So you have to work on your posture, you have to work on understand your body. Mechanics, you have to understand that you have to have a correctly aligned body. Okay? So like you do lunges, you do back strengthening exercises, you are doing your shoulder exercises, everything counts, everything. Every small thing which you do, which you feel that it's of no use, but it counts.
I want to say that your body, your soldier's body is our national asset. Asset, you understand? Yes. So the body, our body is not just our body. Every armed force person is a national asset. Orthopedics is the backbone of military fitness, and you have to take care of your bones, joints, muscles, and you have to have your movements, you have to have a good endurance. So you are the future soldiers of our country. Am I right? Yes, that's good. So whatever being healthy is your responsibility. It's not the institute's, it's not the teacher's responsibility. The first thing, motivation has to come from yourself, from within you. Even if I am healthy, I'll be able to deliver whatever work I'm doing. So to give time to your body is very important. The first thing you need to care is to take care of yourself. You can't take care of yourself, what will you take care of?
जय हिंद। आप ये पीछे देख रहे हैं, ये सारे परमवीर चक्र विजेता हैं। बीइंग ए डिफेंस पर्सन और हेड ऑफ डिफेंस इंस्टीट्यूट, जो हमारे फौजी हैं वो तो जब ज़रूरत पड़ती है अपना ब्लड बॉर्डर पे देते ही हैं, आप देखते ही हैं। लेकिन पीस टाइम में, शांति काल में भी दून डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट के साथ साथ स्टाफ भी जब सोसाइटी को ज़रूरत होती है तो अपना ब्लड डोनेट करते हैं। और आज ये सारा हमारा स्टाफ है, बहुत सारे DDA डायमंड्स ने और फैकल्टी स्टाफ ने भी अपना ब्लड दिया है। और ये हमारा IT टीम के लोग अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हमारा 24th ये ब्लड डोनेशन कैंप है जो महेश इंदेश हॉस्पिटल के साथ मोहित जी आप आएंगे ना, चावला जी के द्वारा ये आयोजित हो रहा है। और ये कई सालों से ये इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ इस मेरा मैसेज को शेयर ज़रूर कर दें। बीइंग ए डिफेंस पर्सन मैं बोल रहा हूँ और एक डिफेंस इंस्टीट्यूट के हेड होने के नाते भी बोल रहा हूँ, ज़रूरत पड़े बॉर्डर पे अपना खून देने से पीछे ना हटें, वो तो हम हटते नहीं हैं। और लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीस टाइम पर जब सोसाइटी को ज़रूरत है तो अपना ब्लड ज़रूर डोनेट करें, क्योंकि एक एक ब्लड की बूंद किसी ना किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। माय नेम इज़ ऋतिक सिंह एंड आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। एंड आज 26 जनवरी को यहाँ पर दून डिफेंस एकेडमी पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ पर मैंने ब्लड डोनेट करा एंड काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मेरे को ब्लड डोनेट करने के बाद। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा सबको कि सबको अपना ब्लड डोनेट 3 मंथ्स में कर दिया करें, क्योंकि जो नीडी पीपल है उनकी हेल्प होगी इससे। थैंक यू। मेरा नाम लक्की जसवाल है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई कर रहा था। आज गणतंत्र दिवस के दिन में हमारे एकेडमी के थ्रू फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री ब्लड डोनेशन कैंप लगे रही, जेवा मैं आया हूँ और आज अपन सहयोग प्रदान करे हो। थैंक यू। हर हर महादेव भाइयों, मेरा नाम ललित है और मैं हरियाणा झज्जर से बिलोंग करूँ हूँ। और दून डिफेंस एकेडमी में मैंने ब्लड डोनेट करा है 26 जनवरी के दिवस पे। और भाई तुम भी डोनेट करा करो, ज़रूरी है, किसी की सहायता होवे, हमारा एक छोटा सा सहयोग किसी की ज़िंदगी बचा सका है, तो धन्यवाद। जरूर करा करो भाई तुम भी। Jai Hind everyone, I am Ananya Raghav from Haryana. I am preparing for NDA from Doon Defence Academy. Today is 26 January, Republic Day. Our academy has arranged health camp for blood donation and checkups. The energy that our academy has shown today is unmatchable. Let's keep the spirit of patriotism alive inside us. Jai Hind. Kindly subscribe DDA YouTube channel and don't forget to press bell icon.